The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hi, good afternoon. Audible to? I'm assuming that I'm audible. If not, please let me know in the chat box so I will be able to know it. So if I'm audible to you, let's start with the session. So these days, whenever you meet your friends or neighbors or your relatives, you get to know that a lot of people are trying their hands on options trading, right? Or but you're not able to do it because you don't know the fundamentals or the basics of options trading, right? Or maybe you're a equity trader, right? And you want to explore the options market as well, but you're not able to do it because the same reason you don't know the basics or how the option works, right? How the option trading works. There is a huge volume that takes place daily in the Indian market in the options, right? So for the same reason, we will learn the option fundamentals today in this webinar. This will work as a complete guide for all the beginners who want to start the options trading and who want to learn more about the options. All right, so my name is Sonali Palande, and I'm a derivative product strategist in HDFC Securities, and I'll be the speaker for today's webinar. All right, so we will go forward and start off. Before going forward, I'll just read the standard disclaimer to you all. The content and explanations shared in this webinar are only for information and educational purpose. Stock market trading, investment are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making financial decisions. All right, so what is options? You must have heard this particular word options for the millions of times, correct? आपने बहुत बार ये options trading सुना होगा, but ये होता क्या है? कि क्यों ये ऑप्शंस ट्रेडिंग लोग करते हैं या ये किस तरीके से प्लेस करता है, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ डू यू बिकम ऑप्शन ट्रेडर? तो इसका हम स्टार्ट में एक डेफिनेशन देखते हैं छोटा सा. Options are financial instruments that give investor the right but not the obligation to buy or sell an underlying asset such as stocks, commodities, currencies at a predetermined price called the strike price within a specified period of time. Now we saw this definition, right? But as usually we do, हम लोग definition देखते हैं फिर उसका एक simple meaning निकालते हैं. Same way, अभी definition से आपको क्या समझ में आया? You must have understood by now that options एक कुछ contract होता है with a predetermined price that you exercise in the future. ठीक है? Future time के लिए आप एक contract करते हो डीलर के साथ और उसका प्राइस आप प्रीडिटरमाइन करते हो. इतना आपको डेफिनेशन से समझ में आया, राइट? बिफोर गोइंग फॉरवर्ड वी विल जस्ट सी कि ऑप्शंस इवॉल्व क्यों हुए, उसका जरूरत क्या था, ऑप्शंस की लोगों को क्या जरूरत पड़ी. तो पहले के टाइम में क्या होता था कि फार्मर्स फार्मिंग करते थे और जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम आता था तब ड्यू टू सम रीजंस इफ द प्राइसेस कम डाउन फार्मर्स को लॉस होता था, करेक्ट? वो अपना हार्वेस्ट ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख पाते थे. तो अगर तब हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर प्राइस लो है तो उनको उस टाइम पे वो हार्वेस्ट निकाल के लॉस होता था, करेक्ट? तो इसीलिए ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी ऑफ द प्राइस दे केम अप विद अ कॉन्ट्रैक्ट. तो वो लोग क्या करते थे, डीलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि इस डेट में फ्यूचर में मैं इतना इतना क्रॉप आपको बेचूंगा, ऑलराइट, इस प्राइस पे. तो उससे क्या होता था, मान लो कि कोई फार्मर ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 100 रुपीज का, ठीक है? आपको 2 महीने बाद वो क्रॉप बेचना है डीलर को और 100 रुपीज का आपने, मान लो दिस इज राउंड फिगर, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल, 100 रुपीज का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो अगर उस टाइम पे हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर प्राइस आपके क्रॉप का 80 रुपीज भी है तो भी यू विल बी एबल टू सेल इट एट 100, करेक्ट? नाउ यू आर सेफ फ्रॉम दैट अनसर्टेनिटी. बट अगर वो 120 भी रहा तो आप 100 पे ही सेल करोगे. तो बेसिकली दिस वाज अ हेज, ठीक है? जब ऑप्शंस इवॉल्व हुए इट वाज मोर ऑफ अ हेजिंग टूल to the uncertainty of the price, all right, and then it evolved as a trading tool. ठीक है? Whenever
जो भी डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर्स है या ऑप्शंस है, उसकी शुरुआत एज अ हेजिंग टूल की तरह हुई और बाद में उसका ट्रेडिंग में इट गॉट वेरी फेमस. नाउ वी विल गो फॉरवर्ड. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल के ऑप्शंस एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं. ऑप्शंस आपको डेली लाइफ में उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि ऑप्शंस वर्क कैसे करते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट यू आर ऑन हाउस हंट. ओके, आपको एक घर खरीदना है और आपका अप्रोक्सीमेट बजट है 50 लाख का, बट राइट नाउ यू डू नॉट हैव दैट 50 लाख इन योर हैंड. आप 50 लाख पूरा उठा के कैश नहीं देते हो, राइट? यू ट्राई फॉर लोन्स और यू समहाउ यू हैव सम प्लान इन योर माइंड, राइट? बट यू डू नॉट वेट टिल यू हैव होल दैट अमाउंट इन योर हैंड. यू डोंट वेट फॉर दैट टाइम. तो आपके पास एक 3 महीने का टाइमलाइन है कि 3 महीने में मैं 50 लाख के अराउंड का एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ. ठीक है, सो इसी टाइम में आपको एक प्रॉपर्टी मिली. ठीक है, इसका भी प्राइस अराउंड 50 लाख है और इस प्रॉपर्टी को आपको ये घर अच्छा लगा. ठीक है, बट ये कुछ इनिशियल डेज में ही आपको मिला. आपने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज अभी एक्सप्लोर किए नहीं. यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड many options at that time, right? So you want to explore some more options and you have time as well in hand, right? ये घर आप 50,000 का टोकन अमाउंट देके बुक करके रख सकते हो एंड द पेमेंट टाइमलाइन इज ऑफ 3 months. ओके, 3 महीने में आपको ये डील क्लोज करनी है. आपके पास 3 महीने का टाइमलाइन है. नाउ इन दिस सिनेरियो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इसमें क्या क्या आपके साथ हो सकता है. फर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ कि 3 महीना कंप्लीट हुआ. ठीक है, आपका लोन पास हो गया, आपको और कोई घर अच्छा नहीं लगा, यही बेस्ट था. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपने यू बॉट दैट हाउस फॉर 50 लाख क्लोज्ड. ठीक है, विद इन 3 months you bought that house for 50 lakhs. Say, second scenario क्या हो सकता है? In the second scenario, what can happen? Let's say that your loan was not passed. All right, now you cannot buy that house. You do not have 50 lakhs in your hand, correct? So that is one case. Another case, let's say you explored some more properties and you liked some other house. Okay, and that is for lesser amount. Let's say वो 45 lakh का property है. ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि आपने जो टोकन अमाउंट दिया था 50,000 का, वो आप जाने दोगे. यू विल लेट इट गो. वो 50,000 का आपको लॉस हो जाएगा, करेक्ट? बट आपने ये दूसरा प्रॉपर्टी खरीद लिया 45 लाख पे, या फिर जब अगर आपका लोन ही पास नहीं हुआ तो आप वैसे भी कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते हो. इन दैट केस ऑल्सो यू विल हैव टू लेट गो दिस 50,000 दैट यू पेड एज अ टोकन अमाउंट. ऑलराइट, दिस इज द सेकंड सिनेरियो. नाउ इन थर्ड सिनेरियो व्हाट कैन हैपन, आप और आपके फ्रेंड दोनों लोग हाउस हंट पे थे, या फिर आप किसी को जानते हो जो वो इंसान भी दैट पर्सन आल्सो वांट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी इन दैट सेम एरिया. ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, योर लोन वाज नॉट पास्ड. Okay, but you have this booking, so what you will do, you're showing this property to your friend, okay, who is also interested. So that guy likes this property and want to buy it. Okay, अब आप क्या करोगे, आपने जो टोकन अमाउंट देके बुकिंग किया था दैट यू आर सेलिंग टू दैट योर फ्रेंड. ओके, तो इसमें आपने किया, जो 50,000 में आपने वो प्रॉपर्टी बुक किया था, सेम बुकिंग आपने आपके फ्रेंड को दिया, करेक्ट? यू हैव द एडवांटेज ऑफ बुकिंग इट अर्ली, राइट? अगर आपका फ्रेंड खुद प्रॉपर्टी ये देखने जाता तो उसको नहीं मिलता, बिकॉज इट वुड हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड, करेक्ट? तो उसके लिए आप एक छोटा सा प्रीमियम आपके फ्रेंड से ले लोगे, तो यू आर सेलिंग दैट टोकन फॉर 55,000. तो इसमें क्या हुआ कि आपने तो ये घर खरीदा भी नहीं, यू डिड नॉट इवन ओन इट, बट you sold the token only or the booking to your friend and made some profits. All right, so these are three scenarios where you actually bought that house, the same house that you booked. Second, you did not buy that house and your token amount was lost. Okay, and third, you sold your token or your booking to your friend and made small profit. Okay, now how do we relate this analogy to options? फर्स्ट केस में क्या हुआ, यू एक्सरसाइज्ड योर ऑप्शन. ओके, यू एक्चुअली एक्सरसाइज्ड योर ऑप्शन के आपने जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया था वो आपने एक्सरसाइज कर लिया. सेकंड में क्या हुआ, यू कुड नॉट एक्सरसाइज योर ऑप्शन. ओके, तो ये एक्सपायर हो गया. 3 मंथ का आपका टाइमलाइन था, 3 मंथ में आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सरसाइज नहीं किया, तो आपका ऑप्शन एक्सपायर हो गया. थर्ड में क्या हुआ, यू सोल्ड द ऑप्शन.
आपने जो सिर्फ बुकिंग अमाउंट भरा था वो बुकिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देखे, यू ओनली सोल्ड दैट पर्टिकुलर बुकिंग, आपका वो घर के कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है. So these are the three things happen in options as well. You can exercise your option on your expiry date, or if you do not do that, your option gets expired. And third thing, you can also sell it. You can pass it on for profits. All right. So अभी इसमें जो हमारा कॉस्ट था, ये जो घर है, ये इसका कॉस्ट है, ये टोकन अमाउंट है, ये पेमेंट टाइमलाइन है. हाउ डू वी रिलेट इट टू द ऑप्शंस मार्केट? सिंपल है. अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रेडिंग निफ्टी, what is nifty over here? Nifty is this property, okay? Nifty's price is this cost, ठीक है? And the premium that you pay in terms of options, आप ऑप्शन खरीदने के लिए जो प्रीमियम पे करते हो वो ये 50,000 है, और ये टाइमलाइन क्या है? आपका एक्सपायरी डेट. ऑलराइट, समझ में आई बात? So these are all factors you get to deal with when you are into options. Now अब हमने ये देखा कि ऑप्शंस में ऑप्शंस होता क्या है, या ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है, बट ऑप्शंस को खरीदना कैसे? हाउ डू यू बाय इट? बिकॉज when we talk about futures, you can simply buy the future or sell the future, right? But options में ऐसा नहीं है. In options you get two kinds of options, call option and put option. Okay, so first we will see the call option. A call option gives the holder the right to buy the underlying asset at the strike price before or at the expiration date. Call options are typically used by investors who believe the price of the underlying asset will rise. Okay, so इसमें एक छोटा सा point आपको pick करना है कि when do you buy a call? When a person buys a call, when that person is bullish on some entity. Okay, when you think that particular stock or index or any entity, its price is going to go up, that time you buy a call option. All right, so let's see this with an example. सेम एग्जांपल ले लेते हैं. आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, ऑलराइट? कोई एक एरिया है, सिटी से थोड़ा दूर है, थोड़ा सा दूर है, बट इसमें एक न्यूज है जो आपको पता चल गया. इट इज नॉट आउट येट, ओके, बट द न्यूज इज दैट देयर इज अ बिग आईटी पार्क कमिंग, ओके, नियर टू दिस पर्टिकुलर एरिया. तो जब आईटी पार्क आएगा, प्राइजेस क्या होंगे? राइज होंगे, करेक्ट? So you want to take the advantage of this news, right? But you do not have, अभी average price इस particular area में चल रहा है 50 लाख का per property, okay? You do not have that money. You only have 2,50,000. आपके पास बस 2.5 लाख है. बस 2.5 लाख यूज करके आपको इस न्यूज से एडवांटेज लेना है. What you will do? Now आप क्या करते हो कि इसमें एक प्रॉपर्टी आपको बुक करने के लिए you have to pay the token amount of 50,000, right? What you are doing, you're booking 5 properties or 5 flats in that area with all your amount 2,50,000. all right, and you have the timeline. जब भी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया बुकिंग का, you have a timeline of 1 month, okay, but you expect the news to come out and to reach the greater audience within 1 month of time. all right, so this is your plan. Now, as expected, the news comes out, and more and more people are interested to buy property in that particular area, and the price of that properties or flats go up. So पहले जिसका प्राइस 50 लाख का था, अभी करंटली उसका प्राइस हो गया है 65 लाख ईच प्रॉपर्टी. ऑलराइट, तो इसमें अभी आपने तो, आपके पास 50 लाख तो था ही नहीं, कोई एक प्रॉपर्टी खरीदने का भी पैसा नहीं था. You just had the bookings, right? You just paid the token amount and you only booked the properties. But now there is very high demand and a lot of people are approaching you that if you want to sell your bookings, all right? So now what you're going to do, you will sell your bookings which you bought each property's booking for 50,000 premium. Now you're selling it for 70,000 each property. So what happened in the period of 1 month? You made a profit of 20,000 each property. 1 lakh का आपने प्रॉफिट बनाया आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे 2,50,000 पे, करेक्ट? सो इस केस में क्या हुआ कि आपने, you did not even own one single property, correct? But you made some profits based on the bullish news that was going to come out. But इसमें ये भी possibility थी कि that news was only rumor. Okay, in that case you would have lost all your token amount.
because you did not have money to exercise that contract. All right. So this is also a possibility when you trade in options. When you trade, if you buy a call option and the Nifty or any entity index stock, it does not go to your direction, there is a possibility of making losses as well. All right. So this is how option works. So this is the idea of call option. Now same way there is put option as well. Put option क्या होता है? A put option gives the holder the right to sell the underlying asset at the strike price before or at the expiration date. Put options are typically used by investors who believe the price of the underlying asset will fall. So similarly, जैसे पहले केस में the investor knew that the prices of those properties will go up. Now उसको क्या लग रहा है कि अभी जो प्रॉपर्टीज है उसके प्राइसेस डाउन होने वाले हैं, तो उसका वो कैसे एडवांटेज उठाएगा. ऑलराइट, लेट्स सी एन एग्जांपल. यू हैव अ प्रॉपर्टी, ओके, व्हिच यू बॉट 5 years बैक फॉर 38 lakhs. ठीक है, उसका करंट वैल्यू है 50 lakh का. ओके, बट नाउ you beforehand have a news that there is some land, vacant land near to the property, and government is going to allocate that particular land for a dump yard. So if a dump yard comes to near your property, what will happen? The prices will go down, right? So as soon as possible, you want to sell that property and come out of it. Okay. So what you will do before the news comes out, all right, before the news comes out, you're making a deal, okay, for 50 lakh. आपने ये 50 लाख पे एक बायर को ढूंढा और उस बायर को आप ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 50 लाख पे. ठीक है, आपने टोकन अमाउंट ले लिया 50,000. ऑलराइट, नाउ द न्यूज कम्स आउट एंड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉल्स डाउन. 50 लाख से वो 45 लाख पर आ गया. बट बिकॉज यू हैड अ कॉन्ट्रैक्ट अर्लियर, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू आर एबल टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर 50 lakhs, राइट. तो ये आपका प्रॉफिट ही हुआ, करेक्ट, बिकॉज आपके प्रॉपर्टी जो भी आपका घर था या प्रॉपर्टी थी, उसके प्राइसेस डाउन होने के बाद भी यू आर स्टिल सेफ ऑफ दैट डाउनवर्ड ट्रेंड. सो दिस इज द पुट ऑप्शन. नाउ हम लोग ने ऑप्शंस क्या होते हैं वो देखा. ऑप्शन में दो टाइप होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. वी सॉ बोथ द टाइप्स. ऑलराइट, सो नाउ वी विल सी whenever you go and actually trade, so आपको screen कैसे दिखता है. So this screenshot I have taken from HDFC Sky app, and there is this Sensex option that I have displayed. Okay, just like Nifty, we get Sensex options as well. This is from BSC. All right, and the lot size for this particular index is 10. So there are a lot of very nice opportunities, trading opportunities in Sensex as well. There is BankX as well, which comes from BSC. It also has good trading opportunities. All right, so do explore it. Now coming back to the this thing, terminologies. Here, when you read it, Sensex 9 Feb 24, 72,900 CEW. This is what you can read, right? But what does it mean? This means that the underlying over here is Sensex. This option belongs to Sensex. Okay, underlying is Sensex. Strike price is 72,900. Option type is call, and expiry date is 9th Feb 24, 2024. Okay, so the indices generally have weekly and monthly expiries. All right, so there are different expiries. I will explain it further. So lot size, as I mentioned earlier, for Sensex it is 10. So if you want to buy more lots, you can simply buy it in the multiplies of 10. Okay, now the premium. Now you are seeing this 150 price that you're going to pay if you want to buy this option. That is your premium. Okay, and the tick size is 0.05. So this is how you're going to see the details on your screen when you actually go to trade the options. All right. Now, if you see, if you can see this table, we have a lot of different indices available in the market. So these days, what is happening? Every day there is expiry of some of the other index, right? So on Monday, there is mid cap index that expires, which has a lot size of 75. It comes from NSE derivatives. Okay, same way on the Monday itself, there is BankX expiry also.
and it has a lot size of 15. It comes from BSE. Okay. On Tuesday, it's Fin Nifty. The lot size is 40. Okay. On Wednesday, it's Bank Nifty. Bank Nifty, as you all know, right? Bank Nifty and Nifty are the most known indices. So Bank Nifty has now lot size of 50. Thursday, it's Nifty. The lot size is of 50, right? And on Friday, the Sensex has the expiry on Friday, and the lot size is 10. It comes from BSE derivatives. Okay. So these are the basic idea that I wanted to give about the expiries of the indices and the lot sizes. All right, so we will just go forward. Right now, we saw that whenever you have whenever you are bullish on something, you buy a call, or whenever you are bearish on something, you buy a put. But which put, which call, which strike price should you choose, right? अगर आपको लगता है कि निफ्टी 22,000 के ऊपर जाने वाला है, तो आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है? 22,000, 22,100, 22,200, which strike price? There has to be some logic behind choosing the strike price as well, correct? So for that, we will learn the concept called ATM, ITM, and OTM. All right. So in the money is, there are three things: in the money, at the money, and out of the money. Okay. So now this is the example for call side. Let's say Nifty spot is at 22,000. Okay. So the 22,000 strike is your at the money strike. Okay. Or if it is not exactly at 22,000, the nearest strike to your spot of your entity or the underlying, it will be your at the money. Okay, nearest strike you have to find, that will be your at the money spot price. Okay, spot and the index, you have to compare both of them. That will be your at the money. Now, when you talk about calls, if Nifty is at 22,000, all the strikes which are smaller than 22,000, those will be your in the money strikes. Okay, and all the strikes which are bigger than your 22,000 will be the out of the money strikes. Okay, so this is the logic. I am going to explain it even further. All right, this is the in detail example. Here, Nifty spot is at 21,925. Okay, and this is the option chain. You can see the strike prices over here from 21,700 to 22,150. All right, now first we will see on the call side. Because Nifty spot price is at 21,925, what is the nearest one? These both can be the nearest strikes, correct? 21,900 and 21,950. ये दोनों भी nearest हो सकते हैं by logic, correct? But for now, I'm going to consider this 21,950 as ATM, क्योंकि slightly अपना spot 21,900 के आगे है, इसलिए मैं 950 को चूज करूंगी एज अ ATM. ठीक है. So now we know what is our ATM strike. What is the ITM in this particular chain? Now अपना spot है 21,925. Thus all the smaller strike prices than this spot, 21,850, 800, 750, all these are in the money. Okay, and the bigger strike prices than your spot, 22,000, 22,050, 100, 22,150, all those are your OTMs. Okay, out of the money. Same way when you talk about puts, put में क्या है कि जो आपके spot से smaller है, those are your OTMs, and all the strike prices which are bigger than your spot are your in the money. Okay, now by now you must have observed that this is opposite for your call and put side. All right, now you see this LTP column as well, right? These are the prices of calls and puts, right? For example, 21,800 has a call which will cost you 158.30. Okay, so this is the pricing of the option. Now if you observe the call side, 21,700 की price है 237 and 22,150 call की price है 15. So which means ITM की तरफ से OTM की तरफ जाएंगे तब आपका जो कॉस्टिंग है वो चीपर होता जाएगा. अपोजिट वे आपके पुट साइड में 22,150 का प्राइस है 247 एंड 21,700 का प्राइस है 19.
तो जब भी आप आईटीएम से ओटीएम की तरफ जाओगे पुट्स में भी आपका प्राइस लो होते जाएगा। तो व्हाई डज इट हैपन? आपका कॉस्टिंग कैसे डिसाइड होता है? ये जो डिक्रीजिंग वैल्यूज है आपके ऑप्शंस के, वो क्यों हो रहा है? देयर इज सम लॉजिक। ओके, फर्स्ट लॉजिक इज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। नाउ when the spot is near to 21,900, okay, let's imagine, हम लोग एक राउंड फिगर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 21,900 पे अभी निफ्टी है। As a call buyer, what is your expectation that Nifty will go upwards towards 22,150, correct? Right? Which means that it has already covered these strikes 21,700, 21,800, इसने already ये strikes को cover कर लिया है, right? और उसके बाद ये 900 पे आया है और अभी भी ये ऊपर जाएगा। तो when we talk about 22,000 and when we talk about 22,150, which strike has higher probability to come first? 22,000, correct? जब आपका कॉल जब भी निफ्टी ऊपर जाने को स्टार्ट करेगा, सबसे पहले या सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज का है? 22,000 आने का, राइट? मोर देन 22,150, विच इज वाई आपका 22,000 का कॉल कॉस्टलियर है 22,150 से, ठीक है? सो दिस इज द logic of probability. The pricing is based on the probability. Okay, higher the probability, higher the price. Same way in the puts. If the Nifty is at 21,900 and if you are a put buyer, what is your expectation? That it will fall down towards 21,700, which means that first point, that either it has come from 22,100 to 21,900 and now it is going to fall further down, ठीक है? ये केस हुआ, या फिर ये नीचे से ऊपर तक आया 21,900 तक और यहाँ से रिवर्सल लेके वापस से गिरेगा, correct? But in any case it is going to fall down. So these are your safer strikes. All right, the in the money strikes are your safer strikes, which is why these are costlier, and your OTM strikes are your riskier strikes, which is why these are cheaper, correct? So this also has the probability, जब भी निफ्टी गिरेगा तो 21,800 पहले आएगा, उसके बाद में 21,700 आएगा, राइट? तो विच इज वाई आपके 21,800 पुट का प्राइस ज्यादा है 21,700 के पुट से, करेक्ट? सो दिस इज वन लॉजिक। सेकेंड लॉजिक, आपका प्राइसिंग जो होता है ऑप्शंस का, उसमें दो टाइप के वैल्यूज होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ऑलराइट, तो ये समझने के पहले हम लोग ने यहाँ पे एक डिस्कस किया था कि विच स्ट्राइक यू वांट टू चूज। सो एज आई मेंशन्ड, योर इन द मनी स्ट्राइक्स आर सेफर एंड ओटीएम स्ट्राइक्स आर a little bit riskier. So whenever you are choosing the strike price, it is always advisable to go with the in the money options. All right, now we will go forward and see the other logic of the pricing of the option. Okay, so as we saw, it has intrinsic value and extrinsic value. Extrinsic value is nothing but the time value. ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू को समझने के लिए। इमेजिन के देयर इज सम सिंगिंग कॉन्सर्ट इन योर सिटी। ओके, कोई सिंगर आ रहा है आपके सिटी में, कोई कॉन्सर्ट है। नाउ द बेस टिकट कॉस्ट इज ऑफ 10,000, ओके, एंड वीआईपी पास इज कॉस्टिंग यू 15,000. नाउ व्हाट इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज टिकट्स? What you are getting in both of these tickets, that you will be able to see the concert. Okay, you will be able to attend the concert. Now what is the difference between these two tickets? आपको वैल्यू एडिशन क्या मिलेगा वीआईपी में? वीआईपी में you will get the access of front rows, you will be able to go in backstage, you will be able to meet the singer, you will get the allocated parking. There are a lot of other value added services in the VIP pass that you're getting. Okay, so now this is the basic example of the intrinsic value and the time value. Now first see what is intrinsic value. Intrinsic value is the portion of an options contract price that is based on the actual or intrinsic worth of the option. All right, if it were exercised immediately. Now इसमें ये आपको क्या बता रहा है कि जो intrinsic worth है, जो basic value है, वो आपका intrinsic value है। All right, जो basic worth, उससे कम कुछ नहीं हो सकता है। All right, सिर्फ ये कॉन्सर्ट देखने के आपको मिनिमम 10,000 पे करने हैं। ऑलराइट, दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू।
What is time value? One second. So what is time value? Time value is also known as extrinsic value, is the portion of an options contract price that exceeds its intrinsic value. So टाइम वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा? आपके जो बेस वैल्यू है, बेस वर्थ है, उसके ऊपर जो भी वैल्यू है वो आपका टाइम वैल्यू है. सो फॉर एग्जाम्पल आपका बेस वैल्यू यहाँ पे 10,000 था और उसके ऊपर आप 5,000 पे कर रहे हो आपकी एडिशनल सर्विसेज के लिए. सो दैट इज योर टाइम वैल्यू इन दिस. ऑलराइट, नाउ इमेजिन कि ये 30 डेज पहले का कॉस्टिंग है. ओके, सो अभी कॉन्सर्ट के लिए 20 दिन बचे हैं, बट वीआईपी पासेस को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. ऑलराइट, सो व्हाट दीज पीपल आर गोइंग टू डू, ये अपने वीआईपी पासेस का प्राइस कम कर देंगे. 13,000 कर दिया, ठीक है. अभी 10 दिन बचे तो भी वीआईपी पासेस पेंडिंग है, अभी उन्होंने 12,000 कर दिया. अभी कॉन्सर्ट का डे आ गया एंड स्टिल दे हैव द वीआईपी पासेस. नाउ व्हाट आर दे गोइंग टू डू, they are going to sell the remaining VIP passes on the last day of the concert for 10,000. okay, so what happened here, जैसे जैसे कॉन्सर्ट पास आता गया आपका जो वीआईपी पास का वैल्यू था वो कम होता गया, डिमिनिश होता गया, और आपका जो कॉन्सर्ट था, कॉन्सर्ट डे पे जितने भी वीआईपी पासेस बचे वो 10,000 पे बिके. क्यों? क्योंकि वो बेसिक वैल्यू था, उससे कम कुछ नहीं हो सकता था. ठीक है, तो एट द एंड एवरीथिंग केम डाउन टू 10,000. So that is the basic idea of your intrinsic value and time value. Okay. So whenever we, if you can see over here, only in the money options have intrinsic value. OTM options do not have any intrinsic value. तो इसका मतलब क्या हुआ कि when we talked about choosing the strike for options, we I mentioned that it is advisable to choose the in the money strike and not the OTM, right? Because OTMs are riskier and in the money are safer. This is the same reason, because in the money options will always have intrinsic value and OTMs will only have time value. So for example, we'll see an example of a intrinsic value. Okay, ये कॉल ऑप्शन है. कॉल ऑप्शन में हम लोग ने स्पॉट अभी हम लोग का चल रहा है 21,925. so we will see 21,900. ठीक है, so 21,900 का अभी करंट प्राइस क्या है? 94 रुपीज. तो 94 रुपीज में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और टाइम वैल्यू कितना है? ओके, दैट वी विल सी. सो इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस माइनस योर स्ट्राइक प्राइस. तो आपका जो भी स्पॉट चल रहा है उसमें से जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस, वो आप माइनस कर दोगे. सो 21,925 माइनस 21,900, व्हाट यू विल गेट? 25 एज अ इंट्रिंसिक वैल्यू. बट आपका एक्चुअल प्राइस कितना चल रहा है? 94. सो 94 में से 25 निकाल दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने निकाल दिया, क्या बचा? टाइम वैल्यू, which is 69. all right, so in this particular option the intrinsic value is only 25 and the time value is 69. okay, when you go OTM, for example this 21,950, 22,000, 22,050, ये सारे out of the money calls है. तो इसके जो प्राइजेस है इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है. तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी की तरफ बढ़ोगे क्या होगा? आपका टाइम वैल्यू डिमिनिश होता जाएगा, करेक्ट? कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट. आपका लेट्स से कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है या फिर मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड है, तो व्हाट विल हैपन? यू आर गोइंग टू लूज ऑन टू द टाइम वैल्यू. ऑलराइट, सो इस केस में क्या होगा कि आपका जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम घटता जाएगा एंड एट द एंड of the expiry it will come down to the intrinsic value. okay, at the end you will have only intrinsic value of that option. सेम वे अगर हम पुट को देखते हैं, पुट में भी सेम चीज है कि आपके आईटीएम ऑप्शंस का ही इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा, ओटीएम्स का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं 22,000 स्ट्राइक का. सो 22,000 का प्राइस क्या चल रहा है अभी? 132. राइट, अभी हाउ डू वी गेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द पुट? यू हैव टू टेक स्ट्राइक प्राइस एंड माइनस द स्पॉट प्राइस. ठीक है, तो हमने 22,000 में से 21,925 जो कि हमारा स्पॉट है वो हटा दिया, बचा कितना? 75. तो ये 75 हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया. ऑलराइट, बट द प्राइस इज 132. तो ये 132 में से 75 अगर मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है
तो बचा हुआ मेरा टाइम वैल्यू है 57, करेक्ट. सो दिस इज हाउ you understand how much is the time value of that particular option and how much the intrinsic value it holds. Of course, when we talk about the premium and if we talk about the time value, it has other factors also that affect it. For example, theta hai ya Greeks hai, but that we are not going to discuss today. We are going to keep this particular session basic, and in the advanced session we will take the Greeks and all the little advanced techniques. सो फॉर नाउ आपको इतना ही याद रखना है कि आपके प्रीमियम में दो चीज है, इंट्रिंसिक और एक टाइम, और जितना ज्यादा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा उतना ही सेफ आपका स्ट्राइक प्राइस होगा. ओके, जितना ज्यादा टाइम वैल्यू है उतना ही रिस्की अपना आपका ऑप्शन है. ऑलराइट, एज सिंपल एज दैट. नाउ हम लोग ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज या फिर ऑप्शन में क्या टाइप होता है, व्हेन यू बाय अ कॉल, व्हेन यू बाय अ पुट, वो सब आपने देख लिया. Now we are going to discuss what is option buying and what is option selling. You must have heard these two things altogether a lot of times, correct? Because option buying और selling opposite है, तो जो भी option buyers होते हैं या फिर जो भी option sellers होते हैं वो काफी argue करते हैं एक दूसरे से कि which is a better technique, correct? So we will just understand what is option buying and what is option selling. So अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया वो ऑप्शन बायर के हिसाब से था. When you are a buyer and you have a bullish view, okay, what you will do, you will long a call, you will buy a call. Long means buying, okay, you will long a call. If you are a buyer and if you are bearish on some entity, what you will do, you will buy a put or you will long put. Okay, as simple as that. But if you are a seller, what you will do, अगर आपका व्यू बुलिश है, आप पुट को शॉर्ट करोगे, आप पुट को बेचोगे, ठीक है. And if you are bearish on some entity, what you will do, you will short on a call. Okay, इसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि अगर कोई कॉल है, मान लो कि 100 रुपीज का कॉल है, ठीक है, 22,000 निफ्टी का कॉल मान लो कि 100 रुपीज पे चल रहा है और आप मार्केट में बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप वो कॉल को बेचोगे. ऑलराइट, सो जैसे जैसे वो कॉल का प्राइस घटते जाएगा आपके प्रॉफिट पॉइंट बढ़ेंगे बिकॉज यू आर अ सेलर. ओके, सो दिस इज हाउ सेलर्स मेक मनी एंड दिस इज हाउ बायर्स मेक मनी. ओके, now let's take an example of Nifty 22,000 call 15 February 2024. Okay, this is example. Now if you are a buyer, you are doing entry at 100. Okay, what will be your cost? 100 into the lot size. Lot size Nifty का कितना था हम लोग ने देखा था 50, right? 100 into 50 आपका कॉस्ट हुआ, तो आपकी एंट्री 100 रुपीज पे हुई थी, आपने एग्जिट किया 170 पे. व्हाट इज योर प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर केस? 70 points. Okay, 70 into 50 will be your absolute profit. Now if you are a seller and if you have sold this particular call at 100, ठीक है, तो what will be your cost? 100 into 50 plus margin. ये plus margin वाला point मैं आपको बाद में समझाऊंगी, but for now just understand that 100 into 50 plus margin will be your cost. And if you are doing exit at 50, ठीक है, 100 से ये ऑप्शन का प्राइस डिमिनिश होके 50 पे आ गया, 50 पे आपने एग्जिट कर लिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया. व्हाट इज योर प्रॉफिट? 50 पॉइंट्स, करेक्ट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाउ बायर इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द ट्रेडिंग एंड हाउ सेलर्स आर गोइंग टू trade into the options. Okay, now there is one logic of why there is no margin which is costed over here for buyer and why seller is giving margin while selling the option. जब हम बायर की बात करते हैं, ये 100 रुपीज पे इसने बाय किया है, करेक्ट, 100 रुपीज पे इसका एंट्री हुआ है बायर का, तो मैक्सिमम ये ऑप्शन कितना जा सकता है? अनलिमिटेड. 100 का 1000 हो गया, 10,000. in rarest of the rare case it can go even 10,000. okay, so this is actually unlimited, the reward is actually unlimited. Okay, but if it doesn't go to his direction, what can happen? What is his maximum loss? It's 100, right? because उसने 100 रुपीज पे किया है, तो ज्यादा से ज्यादा उसका अगर पैसा गया तो कितना जाएगा? 100 रुपीज, right? So for a buyer the reward is unlimited and risk is limited, in this case maximum to 100. all right, but if you are a seller, what will happen?
you have sold this particular option at 100, all right? So maximum आपका profit कितना होगा? ये अगर गिरेगा भी, ऑप्शन का वैल्यू डिमिनिश भी होगा, तो ज्यादा से ज्यादा वो 0 तक आएगा, करेक्ट? उससे माइनस में तो जा नहीं सकता है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कैप्ड है, दैट इज मैक्सिमम 100 पॉइंट्स, करेक्ट? विच इज वाई योर रिवॉर्ड इज लिमिटेड इन दिस केस टू 100। बट अगर ये आपके अपोजिट, अगर आपने ये सेल किया है कॉल को, अगर आपने सेल किया है, विच मीन्स दैट यू हैव अ बेरिश व्यू, बट लेट्स से कि आपका एनालिसिस रॉन्ग गया और मार्केट में बुलिश मूवमेंट आ गया, तो दिस 100 कैन बिकम 200, 500, 1000, 10,000. This can become anything, right? There is no capping on upside. So in this case, your loss will be unlimited, right? Which is why the broker is going to charge you a higher margin, which is predefined on your selling of options, which is why I mentioned the plus margin over here. So in this case, what is happening? Your risk is unlimited. Okay, so what did we compare? That for a buyer, your reward is unlimited, right? Because this 100 can become 1000 or 10,000 as well, and your risk is limited maximum to 100. But if you are a seller, your reward is limited maximum to 100, because this 100 can maximum go to 0. It will not go below than 0. But your loss is unlimited, your risk is unlimited, because this 100 can become 1000, 10,000, anything. In that case, you will be losing a lot of money and your loss is unlimited. So this is the basic idea of what is option buying and what is option selling. And with this basic idea, I hope that you will be able to choose what suits you better, if option buying suits you or option selling suits you. All right, so in this session we had kept the things at a very basic level that any beginner will be able to grasp it. And we do not really want to put a lot of advanced things over here to confuse you all at this level. All right, but then in the advanced session we will take a bit complicated things which will come in picture, for example Greeks or strategies and all of that, buying, selling, all of that. So for now in this session, this is all, and I hope that you got a fair idea of how option works. And if you're a fresher and if you want to start off with options trading, I hope that now you have a some base of understanding कि ऑप्शंस में ट्रेड कैसे होता है या फिर ऑप्शंस वर्क कैसे करते हैं. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल इन दिस सेशन. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, you can let me know in the comment box and I will be able to see it. All right, so I will try to take as many questions as possible. Okay. Okay, there is one question. Since ITM are costlier, how to manage order with less capital? If you have, the strike price or the strike price that you choose for trading, it does not or it should not really depend on how much capital you have. All right, it should have a logic of what level you are expecting in that entity. आप वो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल निफ्टी है, अगर निफ्टी का आप क्या लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हो नियर फ्यूचर में, उसके बेसिस पे आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, ना कि आपके इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन हाउ मच कैपिटल यू हैव. ये जनरली होता है कि अगर कैपिटल छोटा है तो यू टेंड टू बाय ओटीएम ऑप्शंस, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है. So it is always advisable to have sufficient capital and to have a good position sizing. Position sizing क्या होता है ना, कि मान लो कि आपका 1 लाख का कैपिटल है, तो आपको एक ट्रेड में पूरा कैपिटल एक साथ नहीं लगाना है. ठीक है, तो 1 लाख में अगर मान लो कि कोई ऑप्शन के आपको 10 लॉट्स इफ यू आर एबल टू बाय,
आपको ऐसे नहीं करना है कि जितने लॉट्स मैं खरीद सकती हूँ 1 लाख में उतने सब मैं एक ही ऑप्शन में या एक ही ट्रेड के खरीद लूंगी. दैट इज नॉट अ राइट वे टू ट्रेड इन ऑप्शंस. यू हैव टू डिवाइड योर कैपिटल फॉर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स. तो उसका लॉजिक क्या है कि एक ट्रेड में मान लो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉस, राइट? यू कैन नॉट बी श्योर दैट आपको आपने अगर वो ट्रेड लिया है तो आपका प्रॉफिट ही होगा. सो यू ऑलवेज हैव टू हैव दैट पॉसिबिलिटी बैक ऑफ योर माइंड. इसीलिए आपको आपका कैपिटल डिवाइड करना है फॉर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स. तो अगर एक ट्रेड में आपका लॉस हो भी गया, यू स्टिल हैव सफिशिएंट कैपिटल टू ट्रेड इन डिफरेंट स्ट्राइक्स. और जो भी आगे के ट्रेड्स या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यू शुड हैव कैपिटल इन हैंड. ओके, आपको सारा कैपिटल एक ट्रेड में फंसाना नहीं है. So that is your position sizing, and this is how you have to manage your capital, and this is how you have to choose the strike prices. Why time value is always high in option? It is not that it will be always high. अगर आप in the money options देखेंगे तो आपका intrinsic value बड़ा रहेगा time value से. और जैसे जैसे आप OTM जाएंगे तो OTM फॉर एग्जाम्पल एट द मनी का आपका जो टाइम वैल्यू रहेगा वो हायर रहेगा, OTM का जो टाइम वैल्यू रहेगा वो हायर रहेगा. बट इन द मनी स्ट्राइक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बड़ा रहेगा. So this is how your pricing will work. On HDFC Securities website, where do I see the screenshot of options shown during presentation? Okay, so there is a pro terminal. If you log into the website, you will be able to see the pro terminal. Into that, you just have to enter Nifty or any entity that you want to see, and you will get a option chain of that particular index or stock. It is very simple in that particular website. Can we have a recording of this? Of course, just after this session ends, you can go and visit the YouTube channel of HDFC Securities and you will get the recording over there. We have done so many other sessions as well on various other topics such as option chain and technical analysis, chart patterns, price action. सो ऑल द रिकॉर्डिंग्स आर देयर. सारे रिकॉर्डिंग्स वहां पे सेव्ड है, आप जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो. यू कैन वॉच ऑल ऑफ दोज सेशंस ओवर देयर. ओके, व्हाट इज द स्पॉट प्राइस? स्पॉट प्राइस मतलब फॉर एग्जांपल निफ्टी है, निफ्टी का जो भी प्राइस ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 21,900 के आसपास, तो वो आपका स्पॉट प्राइस हुआ. ठीक है, फ्यूचर प्राइस उससे अलग होता है. फ्यूचर प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको मिलेगा. तो फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. वी आर गोइंग टू फॉलो स्पॉट प्राइस व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शंस. ओके, how to decide stop loss? So stop loss is a little first thing, you always have to follow the stop loss, but then how do we decide it? I have kept it for the advanced level session. So next to next week we have planned to come up with the advanced level session. Okay, so in that I'm going to include the stop loss, trailing stop loss and all of that, the risk management part, the hedging part. All right, so वो सब उसमें आएगा. So that will be the advanced session. Okay, so there is a very good question. Why people sell the call if risk is unlimited? So sellers का जो risk होता है वो unlimited होता है, buyers का risk होता है limited होता है. But
3 पॉसिबिलिटीज होते हैं कि आप जब भी कोई ट्रेड में एंट्री करते हो, 3 चीजें हो सकती है। एक तो मार्केट आपके फेवर में चला गया, एक तो मार्केट आपके फेवर में नहीं गया। तो फर्स्ट केस में बायर भी प्रॉफिट बनाएगा, सेलर भी प्रॉफिट बनाएगा। सेकंड केस में जहां पे when it is going opposite to your direction, buyer is going to make loss and the seller is also going to make loss, correct? अभी तक ये सेम है, बट थर्ड पॉसिबिलिटी कि मार्केट कहीं गया ही नहीं, मार्केट रेंज बाउंड है, वो ना ही नीचे गिरा ना ही उसमें अपसाइड मोमेंटम आया। सो व्हाट विल हैपन, बायर का इसमें लॉस होगा। ओके, क्यों? क्योंकि आपका जैसे हमने देखा कि एक ऑप्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और टाइम वैल्यू होता है, तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ते जाएंगे टाइम वैल्यू डिमिनिश होता जाएगा। ऑलराइट, तो उसके वजह से ऑप्शन बायर ने मान लो कि 100 पे खरीदा है, तो सेम लेवल पे भी अगर मार्केट रुका तो भी वो 100 डिमिनिश होके 90-80 तक आ जाएगा उस ऑप्शन का प्राइस। तो इस केस में उसका छोटा लॉस हो जाएगा, बट ऑप्शन सेलर विल मेक मनी। okay, why? Because the time value is diminishing, so ultimately the premium is coming down. So अगर कोई ऑप्शन आपने सेल किया और उसके पॉइंट अगर नीचे आ रहे हैं, उसका प्राइस नीचे आ रहा है, तो यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट, नॉट एज बिग एज द फर्स्ट केस, बट इसमें आप प्रॉफिट बनाएंगे। एंड एज पर द स्टडीज, आपका मार्केट जो है 70% रेंज बाउंड रहेगा, ओनली 30% मोमेंटम में रहेगा। तो इसीलिए जो सेलर्स है वो सेल करते हैं एंड दे मेक मनी। ऑलराइट, सो इवन इफ देयर इज अनलिमिटेड रिस्क, they can always keep the stop losses and they can always manage their positions. So this is how sellers are making money and this is why people choose selling. All right. Can we do options trading on HDFC Securities app? Yes, we have all the F&O related, trading facilities. You can trade into options. You can trade into futures of Nifty, Bank Nifty, Sensex, BankX, everything. All right, you have the privilege over there. Is it right to stay out of trading if premiums are high? Uh, if the premiums are high, both option buyers and option sellers can find opportunities if the traders are experienced. इसका आंसर थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, but if you're if you're an experienced trader, you can find the opportunities even if the premiums are high, but then there is risk. Premiums are high because your VIX is high or volatility is high, ठीक है? So ऐसे में there is a chance of your stop loss getting hit, ठीक है? तो you just have to be able to manage your positions well, to even if the premiums are high, you will be able to trade in that case, but it is risky. Is averaging better due to volatility? Not in every trade, but depending on situation. So it is not always advisable to average the trade, but जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि यू हैव टू अलोकेट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल टू अ सिंगल ट्रेड। तो अगर उसका आपका you still have the buffer of the capital for that particular trade, you can still average if you're above your stop loss. Okay, अगर आपका stop loss का level hit हो जाता है, आपको उसके बाद में वो average नहीं करना है कि you should not be hoping that it will come up. Okay, you always have to have a stop loss, but if your capital allows it,
if there is still certain buffer remaining in your capital allocation for that particular trade, you can average. But if it doesn't allow you, you should not average it. Yes, the recording will be available on YouTube channel of HDFC Securities. You can go and access it. How to read open interest in NSE website? See, the option chain is similar to all the option chain that you get on NSE is the same you get on any other website, for example, HDFC Securities website. So we have a session that we did earlier, and there is a recording on the YouTube channel, so you can go and watch it and you can learn how to read the option chain. Okay, if a stock is recommended for buy technically in cash, can we buy it in future or option? So when someone is, for example, some research analyst is suggesting you to buy some stock in cash, okay, it means that probably it will not have the same momentum in near future. ठीक है, हो सकता है कि मोमेंटम थोड़ा स्लो हो, तो कैश में आपका टाइम वैल्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट, या फिर आपके एक्सपायरी डे का कोई झंझट नहीं है, तो कैश में till the time either your profit either your target or the stop loss hits, you can hold that. But in case of the future or the options, you're bound to have an exit before the expiry, correct? So अगर वो expiry के पहले अगर आपका target नहीं आ रहा है, तो it will be a problem for you, correct? So that is why it is not advisable to go blindly if the stock is suggested in cash to go and take it in futures on options. What should be the minimum investment amount in one trade? So every option will have certain lot size, so you should at least आपको कम से कम एक lot तो buy करना पड़ेगा, so that is the minimum investment that you have to have. But maximum कितना करना है, that depends on you and your risk appetite. Okay, so we have taken the feedback that you all want to see, one live example of placing the trades and all of that. So we will try to come up with that for sure. I have noted down the feedback. So for today, obviously I could not take all the questions, but I tried to take as much as I could. And because the time does not permit any more questions, I'm going to, thank you all for being a nice audience. And, we will come up with another session next week and a week after that. So stay tuned for the notification from our side in the mailers, in the push notifications, in our Telegram channel. So stay tuned and see you all again in the next session. Thank you so much.